अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है। ले जी, ये रात के 2:30 बज रहे हैं भाई। लो जी, हम किधर जा रहे हैं जी? हम जा रहे हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल। इंशाल्लाह ताला ये सफ़र अभी हमारा फजर से पहले स्टार्ट होने लगा है इंशाल्लाह जी। तो पीछे टाइसर ये जी फ्रेंड्स, खारियाँ पहुँचे हम फाइनली। यहाँ से हम रिफिल किया, पेट्रोल डलवाया और 10 years of traveling, I say this journey's been amazing. Give up something for Allah, replaces it with something much better. You see, this life is a funny thing. I was daydreaming in Mina, then Arafat in the blazing heat. Muzdalifa was a perfect sleep. The stars on the concrete. This belief here is concrete. Allah, look at what you done for me. Seriously, look at what he done to me. I wish I could stop all my sins. I conceal them cause they're embarrassing. I'm ashamed of my bad deeds, but that will never stop me getting on my knees. This morning I was chilling out in London. फजर की नमाज के लिए अभी रुके हैं। Life of a traveller, journeyman crossing different lands. Can't live this life with a closed fist. Feel like the young boy in The Alchemist. Rather sit with animals than humans, cause it's like these humans ain't human. It's like their hearts ain't even red. You can't justify that type of bloodshed, and they could never get inside my head. Too comfortable with the man I am. Powerful, firm on his feet I stand. Their weaknesses I don't understand. These streets already taken way too many. Cancer already taken way too many. I continue on this journey, soldier, with some mayor on my shoulder. This morning I was chilling out in London, then I ended up in Istanbul. Last night I was in Switzerland. I'm a traveller on these lands. Sitting on a boat going Santander. Cross the border to Morocco, Tangier. Next month shall be Pakistan. I'm a traveller on these lands. This morning I was chilling out in London, then I ended up in Istanbul. Last night I was in Switzerland. I'm a traveller on these lands. Sitting on a boat going Santander. Cross the border to Morocco, Tangier. Next month shall be Pakistan. I'm a traveller on these lands. Yo, traveller on these lands. 10 years of traveling, I say this journey's been amazing. Give up something for Allah, replaces it with something much better. You see, this life is a funny thing. I was daydreaming in Mina, then Arafat in the blazing heat. Last night I was in Switzerland. I'm a traveller on these lands. Sitting on a boat going Santander. Cross the border to Morocco, Tangier. But that would never stop me getting on my knees. This morning I was chilling out in London, then I ended up in Istanbul. Last night I was in Switzerland. फाइनली हम थोड़ा सा Cross the border to Morocco, Tangier. I'm a traveller on these lands. Life of a traveller, journeyman crossing different lands. Can't live this life with a closed fist. Feel like the young boy in The Alchemist. I'm a traveller on these lands. Sitting on a boat going Santander. Cross the border to Morocco, Tangier. Next month shall be Pakistan. I'm a traveller on these lands.
life of a traveller, journeyman crossing different lands. Can't live this life with a closed fist. Feel like the young boy in The Alchemist. Rather sit with animals than humans. I don't understand, these humans ain't human. Take away too much. It's like London, then I ended up in Istanbul. Last night I was in Switzerland. I'm a traveller on these lands. Sitting on a boat going Santander. Cross the border to Morocco, Tangier. Texas, shopping Pakistan. I was in Switzerland. यहाँ उन्होंने आगे से रास्ते बंद किए हैं कि जी हम अभी इधर वाटरफॉल पे आए हैं, अम्ब्रेला वाटरफॉल। लेकिन इधर आगे उन्होंने चेक पोस्ट लगाई है, वो आगे नहीं जाने दे रहे। ईद का तीसरा दिन है तो, लेकिन बाकी लोगों को जाने दे रहे हैं जो जिस बंदे के पास पैसा है, जिस बंदे के पास पैसा है, अच्छी गाड़ी है, उसका सलूट है। हम बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। इरफान साहब की बात गलत है, दो नहीं एक पाकिस्तान के में हम खड़े हैं अहमदाबाद में, यहाँ दो पाकिस्तान की बात है। कोई बंदा हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इतने दूर से कहाँ हमारा सफ़र है, 1500 किलोमीटर का हमने सफ़र किया है इधर आने के लिए, और ये लोग हमें जाने नहीं दे रहे। क्या जी कोई फ़ोन आके करवा रहा है वो गुजर जाए। बाकी हम सुबह 8 बजे से खड़े हुए हैं, टाइम देख लें आप लोग, क्या मेरा ख्याल है 12 बज रहे हैं, 4 घंटे हो गए। ये देखें जी लोग बैठे हुए हैं वहाँ, काफ़ी लोग हैं। तो बताओ जरा। बड़ी ही मुश्किल से लॉकडाउन था आज, तो कायदे-ए-आज़म चल रहा था, तो ईमान नहीं किया कायदे-ए-आज़म दिखाने में, तो बड़ी पैदल चल के आए हैं अभी। तो देखते हैं अभी इंशाल्लाह ताला। हमारे जवान स्लो है डंकी लगाने में। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार जिनी स्पीड ना उतर रही ना, तुसी स्पीड ना उतरो क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। समझाती ध्यान से, डरना नहीं, बढ़ना है।